आज का टॉपिक लिवर। इंट्रोडक्शन या परिचय। द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, weighing between 1 and 2.3 kg. It is situated in the upper part of the abdominal cavity, occupying the greater part of the right hypochondriac region, part of the epigastric region, and extending into the left hypochondriac region. Its upper and anterior surface are smooth and curved to fit the under surface of the diaphragm. Its posterior surface is irregular in outline. इसे हिंदी में समझिए। लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या अंग है जो बॉडी के अंदर रहता है। इसका वजन लगभग 1 से लेकर के 2.3 किलोग्राम तक हो सकता है। यह हमारे शरीर के एब्डोमिनल कैविटी में ऊपरी हिस्से में रहता है और इसका अधिकतम हिस्सा जो है हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया को घेरे रहता है, कुछ एपिगैस्ट्रिक रीजन को, और यह लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया तक पाया जाता है। इसकी ऊपरी और सामने की सरफेस जो है स्मूथ और कर्व्ड लिए होती है, जबकि अंदर की जो सरफेस होती है या पोस्टीरियर सरफेस होती है वो इर्रेगुलर होती है। ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द लिवर: superiorly and anteriorly, diaphragm and anterior abdominal wall; inferiorly, stomach, bile ducts, duodenum, hepatic flexure of the colon, right kidney and adrenal gland; posteriorly, esophagus, inferior vena cava, aorta, gallbladder, vertebral column and diaphragm; laterally, lower ribs and diaphragm. The liver is enclosed in a thin, inelastic capsule and completely covered by a layer of peritoneum. Folds of peritoneum form supporting ligaments that attach the liver to the inferior surface of the diaphragm. It is held in position partly by these ligaments and partly by the pressure of the organs in the abdominal cavity. The liver has 4 lobes. The two most obvious are the large right lobe and the smaller, wedge shaped left lobe. The other two, the caudate and quadrate lobes, are areas on the posterior surface. हिंदी में, लिवर से संबंधित अंग जो उसके सामने, पीछे, ऊपर, नीचे होते हैं उनकी जानकारी। सुपीरियरली एंड एंटीरियरली, ऊपर और सामने की तरफ। डायाफ्राम और एब्डोमिनल वॉल होती है। इन्फीरियरली, नीचे की तरफ, स्टमक, बाइल डक्ट्स, ड्यूोडेनम, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन, राइट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ, इसोफेगस, इंफीरियर वेना केवा, एओर्टा, गॉल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम एंड डायफ्राम होते हैं। लेटरली मीन साइड में, लोअर रिब्स एंड डायफ्राम होता है। The portal fissure. This is the name given to the region on the posterior surface of the liver where various structures enter and leave the gland. The portal vein enters carrying blood from the stomach, spleen, pancreas, and the small and large intestine. The hepatic artery enters carrying arterial blood. It is a branch from the celiac artery, which branches from the abdominal aorta. Now fibers, sympathetic and parasympathetic, enter here. The right and left hepatic ducts leave, carrying bile from the liver to the gallbladder. Lymph vessels leave the liver, draining lymph to abdominal and thoracic nodes. लिवर में एक वह हिस्सा होता है जहाँ से आर्टरीज और वेन्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स आती जाती हैं, उसे हम पोर्टल फिशर कहते हैं। Blood supply. The hepatic artery and the portal vein take blood to the liver. Venous return is by a variable number of hepatic veins that leave the posterior surface and immediately enter the inferior vena cava just below the diaphragm. Structure. The lobes of the liver are made up of tiny functional units called lobules, which are just visible to the naked eye.
Liver lobules are hexagonal in outline and are formed by cuboidal cells, the hepatocytes, arranged in pairs of columns radiating from a central vein between two pairs of columns. Of cells are sinusoid containing a mixture of blood from the tiny branches of the portal vein and hepatic artery. This arrangement allows the arterial blood and portal venous blood with a high concentration of nutrients to mix and come into close contact with the liver cells. Amongst the cells lining the sinusoids are hepatic macrophages, means Kupffer cells, whose function is to ingest and destroy worn out blood cells and any foreign particles present in the blood flowing through the liver. Blood drains from the sinusoids into central or centrilobular veins. These then merge with veins from other lobules, forming large veins until eventually they become the hepatic veins, which leave the liver and empty into the inferior vena cava. Lymphoid tissue and a network of lymph vessels are also present in each lobule. Look at the pics. एंटीरियर व्यू लिवर का दिखाई दे रहा है और पोस्टीरियर व्यू. एंटीरियर व्यू में आपको राइट लोब लार्जेस्ट दिख रहा है और लेफ्ट लोब स्मॉलेस्ट दिखाई दे रहा है, जो बीच में एक फैल्सिफेम लिगामेंट के द्वारा अलग अलग होता हुआ दिखाई देता है. पोस्टीरियर व्यू में आपको पोर्टल फिशर दिख रहे हैं, जिसमें से ब्लड वेसल्स आती जाती हैं, नर्व्स और लिम्फेटिक्स और बाइल जूस के लिए बाइल डक्ट्स आती हैं. ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है एक लोब्यूल का, जिसमें कि हेक्सागोनल लोब्यूल दिखाई देगा. इसको ध्यान से देखिए. इसमें प्रॉपर चैनल दिखाया गया है कि कैसे पेरीफेरी टू सेंट्रल ब्लड फ्लो होता है, जिसमें बाइल डक्ट, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी और साइनसॉइड्स दिखाई दे रहे हैं. सेंट्रल वेन शो हो रही है. Functions of the liver. The liver is an extremely active organ which has many important functions that are described below. Number 1, carbohydrate metabolism. Number 2, fat metabolism. Number 3, protein metabolism. Number 4, breakdown of erythrocytes and defense against microbes. Next, detoxification of drugs and toxic substances. Inactivation of hormones, production of heat, secretion of bile, and storage function. Stored substances include glycogen, fat-soluble vitamin A, D, E, K, iron, copper, some water-soluble vitamins like vitamin B12. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अगले वीक फिर आपसे मिलते हैं. तब तक नमस्कार. जय हिंद.